So let's start with a small invocation. I hope I'm audible. Yes. Okay. Hands on your heart chakra, close your eyes, slightly bow down. To the Lord God, Supreme God, Divine Father, Divine Mother, Holy Masters, Holy Angels, Spiritual Masters, Spiritual Angels, to my beloved Grandmaster Chok Hoksui, Lord Bodhisattva mailing, all the great ones, Holy Gurus, Holy Masters, Saints, Archangels, Holy Angels, Spiritual Helpers. To my heart, soul, to my divine spark, to my divine self, we humbly invoke and thank you for divine guidance, blessings, protection, illumination, love, light, power, bliss, mercy, and joy to help us to have a super successful Navaratri Day 8 session with Gauri Sethi, to help us to be super successful in all endeavors of our life, to help us to seek healings and blessings from Ma Maha Gauri and the healer for the day, to help us to get deep insights from Gauri ma'am on Maha Gauri, and to seek blessings and healings in the form of prayers and invocation. With thanks and in full faith, so be it. Open your eyes with a broad smile on your face. Atma Namaste, everyone. Welcome again. I welcome you all to the session. Welcome, Gauri ma'am. Thank you. Thank you, Bhairavi. Atma Namaste. Yes, Atma Namaste, everyone. So, Neeta, Ben, you can start with the chanting, then I will introduce Gauri ma'am, and then we can go ahead with the session. Correct. Can I have the view of the entire screen, please? I mean, I want to see everybody. So, Yeah. we are already the co-host. I have already made you. Sorry, you're the co-host. How am I? I'm not able to do that. I want to see everybody, like the whole screen, the grid video. You put your view on gallery mode, then you'll be able to see everyone. Go to the right upper part besides recording. Yeah. Click on the view, you'll get two options, speaker and gallery. When you click on gallery, then you'll be able to see everyone. How come you are not able to see? I don't know. I can see only two because it's become, smaller, and then four. But I want to see the whole grid. I understand. There It's are show 70 the grid that is around me. participants already joined. Yeah. Actually, we can see other people also. Many people have kept their videos off, but everyone is there. Yeah, I know, but I just okay. Maybe you need Okay, now, yeah. Now got it. got Thank you. it? Okay. Got it. Yes, thank you. Okay. Yeah. Everyone, please be receptive. Sit with your spine straight. Connect your tongue to the palate. We'll do the Lakshmi Gayatri mantra chanting now. You can mentally or verbally chant with me. And be aware of your crown chakra and be receptive. Om Mahalakshmi Vidmai Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Om Om Mahalakshmi Vidmai Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Om Om Mahalakshmi Vidmai Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Om
Om. Please still be aware. Om Mahalakshmi Vidmaye Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Om. Om Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Om. Om Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Om. Om Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Om. Om Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Om. Om Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Om. Om Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Om. Om Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat. Om. Please still be aware. Be aware of your body. Be aware of your breath. Be aware of your energy. Slowly and gently open your eyes with a big, big smile on your face. Happy Navaratri to all of you. Okay, let's start with the session. Welcome once again, everyone. Happy Navaratri. The divinity in me salutes the divinity in each one of you. Thank you so much. So we have Gauri ma'am on board today. She is the trustee of UP, Lucknow, Delhi, Haryana, Uttarakhand, and Himachal Pradesh. Associate Certified Pranic Healer and Certified Advanced Pranic Healing Trainer. She is dedicated to healing, mentoring, and coaching individuals worldwide through the transformative practice of pranic healing. With over 15 years of experience, she offers physical and emotional healing services while also instructing new students in the art of pranic healing. Affiliated with the MCKS Yoga Vidya Pranic Healing Trust in New Delhi, as well as the World Pranic Healing Foundation and Institute of Higher Studies,
Institute of Inner Studies in the Philippines. Her mission is to promote spirituality and uplift society. As a trustee of the Delhi Foundation for the past 6 years, Gauri ma'am has spearheaded initiatives to produce pranic healing into various sectors, including corporate schools, banks, and NGOs. She has conducted workshops and with medical professionals integrating alternative healing with modern medicine. Currently, she serves as a trustee of UP Lucknow and as a trustee of the Pranic Healing Foundations in Delhi, Haryana, Uttarakhand, and Himachal Pradesh. Wow. With a background in marketing, she has organized nationwide workshops to train effective pranic healing instructors and organizers. She has led spiritual retreats with over 100 participants, incorporating group discussions, lectures, crystal healing, and purification rituals. She fosters a sense of community and joy through activities such as games, music, and movies, encouraging participants to embark on an enriching inward journey. Gauri Ma'am's outreach extends to a digital platform with a YouTube channel and a robust presence on social media. She has also appeared on TV and radio shows to disseminate pranic healing teachings to a wider audience. Additionally, she has delivered public talks to gatherings of up to 4,000 people. Drawing from her academic background, Gauri ma'am holds a bachelor's degree in entrepreneurship and small business from Delhi University, as well as a diploma in marketing and business management from IIT Delhi. With 19 years of experience in manufacturing in the fashion industry, including manufacturing, exporting, and managing her private label overseas, Gauri ma'am brings a wealth of expertise in management, strategic planning, and business development to our holistic healing practice. So lovely to have you on board, Gauri ma'am. Thank you so much once again. We welcome you once again. Thank you so much. Thank you, Bhargavi. So thank you so much, Bhairavi and Neetaji, for giving me this opportunity, for connecting with all of you. And thank you, all of you, to take out your time and come and join me for this session. I personally am very happy to be here because I always feel very strongly, or I've always been very enthusiastic in celebrating Navaratras and fasting for all the days and praying to the goddess. Sometime I used to think that I wish I could make a session and talk about it. Of course, I don't know too much, but whatever little I know, I would love to share with you. I hope you enjoy, and I hope I can share something with you. You can share something with me, and I hope we can make it in the given time. I am a very simple person. I talk in a very simple language. So I made some notes and I thought of some things, and I'm going to share that with you. I cannot say that I'm the expert in this topic. So please bear with me. And let's just do this as an interesting, enjoyable way of paying due respect to the Mother Goddess. When I was asked that which Devi, which roop of the Devi would I like to speak on, I chose Mahagauri, as obviously it's a namesake, and I connect very closely to the version of the goddess or the roop of the Devi, which is called Gauri. You know how they used to say in the olden times कि आप जैसा नाम रखेंगे वैसी प्रवृत्ति हो जाएगी. So somewhere I think I connected very strongly with it. And from childhood, I really prayed to Lord Shiva a lot. I was very, very devotional, enthusiastic, and attracted to the form of Lord Shiva. Even now, I think I really pray to Lord Shiva, and I guess
I don't know whether it was the name or whatever, but I feel very connected with Shiv Parvati. So I always try to find the meaning behind Shiv Parvati and their partnership. So first of all, people ask me that it's become very fashionable to say that, Indians are very superstitious or Hindus per se are very superstitious. And why do you fast so much? Like a lot of my friends say that, why do you fast all the days? There's no need, or we do one fast or two fast. It's okay if I speak in English, or I'll keep shifting between English and these. Is that okay with everybody? If anybody has a problem, please just type it in the message. So Ma'am, I'll keep English should be good. English should be good, na? Okay, Yeah. fine. So it's very common. People say, आप इतना व्रत क्यों रखते हैं? आप superstitious हैं, and नवरात्रि तो खाने पीने का ही व्रत होता है, क्यों करते हैं लोग? So I thought about it, and my mind always goes to, I like to connect with spirituality and science. So I felt कि actually why should anybody say हम superstitious हैं या ये अंधविश्वास है? ये अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है. And I studied that actually this is followed in many religions. And the reason behind fasting in the Navratras is very scientific. So I'm sure you must be aware there is a spring equinox and there is an autumn or a fall equinox. अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो नवरात्रे साल में दो बारी आते हैं. एक स्प्रिंग टाइम में आते हैं और एक फॉल टाइम में. स्प्रिंग टाइम इज द सीजन व्हेन नाउ इट इज गेटिंग a little bit warmer and we are preparing for the summer to come. So the leaves are shedding from the trees, and there is like एक पतझड़ होता है, जैसे पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं, स्प्रिंग का मौसम होता है. इसी तरीके से हम लोग उसी टाइम पे नवरात्रे आते हैं. हम लोग सारे उसी टाइम पे पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, प्योरिफिकेशंस करते हैं. हम अपनी पुरानी आदतें, अपनी नेगेटिव थॉट्स, अपने गलत विचार, वो सारे छोड़ते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम 8 दिन पूजा करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो हम एक तरीके से पुराना भूल के, छोड़ के एक नए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. तो हर साल हम स्प्रिंग के टाइम नवरात्रि रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान जी से माफी मांगते हैं जो जो गड़बड़ हमने करी होती है, और उसके बाद एक अपने नया वर्जन बनाते हैं. तो ऑल्सो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जो हम ये व्रत रखते हैं, इसमें जो हम खाना खाते हैं, कुट्टू का आटा हो गया, व्रत के फलाहारी चावल हो गए, और सिर्फ फल हो गए, 2-3 सब्जियां ही खाते हैं, बहुत कुछ नहीं खाते, तो उससे हमारा पूरा सिस्टम चेंज होता है. हम डिटॉक्स करते हैं. जो चीज कही जाती थी कि सुपरस्टिशन है, आजकल बहुत ही फेमस न्यूट्रिशनिस्ट उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं फॉर अ डाइट टू डिटॉक्स योर गट. आपका गट डिटॉक्स होता है अगर आप ये व्रत रखें और सही तरीके से रखें, ओवरलोड ऑफ खाना ना करें, तो आप रियलाइज करेंगे आपका वजन भी कम हो जाएगा, आपका गट भी साफ हो जाएगा. और लाइक दिस से द गट इज एक्चुअली योर ब्रेन. सो इफ योर गट इज क्लीन, योर ब्रेन इज वेरी काम एंड यू थिंक वेरी शार्पली. ट्राई करिए, ध्यान से सोचिएगा. और व्रत सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं, लेकिन तरीके से करें. खाना बहुत इंजॉयबल है और बड़े आराम से पचेगा, लेकिन ज्यादा ना अगर खाएं तो. बट ये पूरा डिटॉक्स होता है आपकी सोल का, आपकी फिजिकल बॉडी का, आपकी माइंड का, आपकी वर्च्यूज का. और आप इसको पूजा करके एक बहुत ही गर्म सीजन के लिए तैयार हो जाते हैं. The heat in the summers in India is very strong, and we prepare our body, cool our body to prepare for the heat. जब पूरी समर्स निकल जाती हैं और बारिशें भी हो जाती हैं, उसके बाद then we are preparing for the winters to come. Again, it's very cold in the winters, so the body again goes through the detox. So now this is the fall equinox. Spring equinox, the energies are coming, fresh energies are coming. And in the fall equinox, we are again going back towards God, and we are again detoxing, but we are preparing for the cold weather. अगेन हम दोबारा डिटॉक्स करते हैं पूरी समर का, अपने बॉडी और शरीर को तैयार करते हैं ताकि वो विंटर्स को झेल सके. सो यू विल नोटिस दैट दिस डिटॉक्स पैटर्न ऑफ फास्टिंग, not only physically but mentally, emotionally, psychologically, and spiritually, twice a year prepares us for transforming our bodies, our auras, year after year, to become a better
spiritual aspirant to become a better soul, have better auras on all levels. All those who are pranic healers will understand that they'll have cleaner, purer auras. That is the reason we do this fasting of the Navratras. This is the logical explanation that I feel is there. Of course, मेरे पहले बहुत speakers आ चुके हैं और वो काफ़ी आपको बता चुके होंगे about the Navratri. So I'm not going to go into too much detail of that. But this is the logical reason I felt it is. And of course, like I said, that we have Mahagauri as the Devi today, and the symbolism of Gauri is what? So I will discuss a little bit about that. That what do I feel about the symbolism? I have made some little notes, and I'm going to share that with you. So when we say that there is God, there are three gods. We talk about Brahma, Vishnu, Mahesh. And with Brahma, Vishnu, Mahesh, what are they doing? Brahma is the creator, Vishnu is the preserver, and Shiva is the destroyer. What are they creating, sustaining, and destroying? What is it that they're doing this constantly? Basically, it's nature. They are doing all this, creating, sustaining, and destroying nature. But nature is the goddess. It is Swambhu. It is self-created. It's sustained and destroyed in the multiple forms of the goddesses, right? So then what are they doing? They are still doing it, although it is already happening, but this is like a perceived reality. What is happening? So God, the mind. Now they say God, the mind is the male and the matter is the female. Shiva and Shakti, right? So God, the mind, that is why you'll notice is all the verbs that they are doing the creation, sustenance, and destruction. Whereas the goddess is the noun, the wealth, the power, and the language or the knowledge. So that is the combination that they make of Shiva and Shakti. And nature is what goddess is. So before humanity, there was only nature. After humanity came the culture. In nature, only the fit survive and there are no favorites. But in culture, even the unfit can survive and thrive. There are also favorites. Kali is the nature, the mother. The hair is unbound, she's not wearing any clothes, and she's wild. That is the mother, Kali, the nature. Gauri is the culture, the daughter, the sister, or the wife. Demure, dressed with hair bound. So that is when the culture came. That is when the domestication happened, right? So we all are aware of the physical appearance, right? Kali is the dark, wild form of goddess, and Gauri is the fair, the decorated, the pure white. She wears only white, that form of goddess. Somehow we are conditioned to assume that the mind is superior to matter. Hence the attribution of the male form to the mind and the female form to the matter. But it is not because of any prejudice. You have to understand that. So it is always said that, Shiva is the consciousness and Shakti is the matter. This is not because it is any prejudice. It's because, and I used to actually think when I was small, I used to always say, but why have we decided that Shiva is the consciousness? Why can't Parvati be the consciousness? Again, you know how when you're younger, you say, no, this is sexual prejudice and, this is not fair. But what it is biologically, if you say the male form lends best to represent the mind, as the mind can express itself and affirm its existence only through matter. It's something similar like the man needs the woman to have a baby, to create. So that is the thought form. And the mind needs the woman to produce a child. That is the reality. So when the man is giving, so for example, in the olden times when they used to say the sage was there and there's some, like a nymph came and then he looked at her and they had a baby. It wasn't that there was any seduction scene happening there. It was simply that there was a quiet mind of the sage. And because of that material or the matter that was there was a thought that came into the head of the sage about the worldly matters, and the thought was produced. It was a thought that came about, and it was provoked. The mind was provoked, and then the world started having events or creation started happening. So Shiva and Shakti is symbolically the mind and the matter.
So that is how it's being represented. Now, when Brahma, the unenlightened mind, he perceives nature, he's unhappy because he feels that the nature is not caring about him, or is not bothered about his gaze. So he wants to control the nature, and he wants to domesticate the nature. But for him, Gauri, who's the daughter, he wants to control her, but she does not want to be controlled. Shiva is indifferent to nature completely. The Devi seeks to marry him, but he's a tapaswin. He has only withdrawn himself, and he's not willing to engage. Now, what happens? Vishnu is the only one who understands and is perceiving the nature. He appreciates Kali and Gauri both. That is the difference between the three aspects of the god. But they understand, and they both, Brahma and Vishnu, sort of get together, and they understand that they need to get a wife for Shiva for creation. So he goes, and you know the whole story about Sati, that how the wife was given, she was Daksha's daughter, and how he feels Shiva. Sati feels insulted, and she burns herself. So that whole story is there. And then the wife of Himavan came again, because for years and years Shiva went back into penance, and he said he will not be a householder. So then Brahma and Vishnu again requested the goddess, and she was reborn as Parvati, and then she was again sent back to become his wife. Now, what did she do? Parvati did not attract Shiva by love, she attracted him by devotion. Remember, she prayed and prayed and did so much penance, and kept praying to him to win his love. She's associated with the household, because she did a ritual, she did yagna, and she prayed to him, and she wanted to be his wife. Now, what happens is, when she marries him, so first child, if you remember, first Shiva was not ready to marry. Then finally he marries, and then when they have a child, first then he was not ready to love. Then when he is ready to love, she has a child. But what does he do? When Kartikeya was born, if you know the story or remember the story, he does not impregnate Parvati only. There is this beej which is given to the fire. It was so fiery that he gives it to Agni, the fire god, but Agni also gets burnt. Then the remains are sent to Vayu. The Vayu also gets burnt, and then it starts boiling. It's given to Ganga, the river goddess, and that also starts burning. Then what happens is, then she just drops it in the forest, and then the Kritika constellation, the 6 star goddesses come, and they take care of the baby. And there were 6 boys. So these 6 mothers who take care of the baby, and they become his 6 mothers. That is why they were called the Kritika constellation. So his name becomes Skanda, yeah, Kartikeya or Murugan. What happens is, then Parvati takes the children back and then puts them into one, and he becomes Kartikeya. So what I'm trying to say is that Shiva still does not give her the son, but it comes back to her. So Shiva's hesitant at every level, right? Then Parvati wants her own son. She says, I want my own son. He refuses to give. So what does she do? She puts that ointment of turmeric on her body, then scrapes it off and creates the child. And then this child is called Nayak. Then what happens? Shiva, when he meets the child, there is this fight between Shiva and Nayak. He beheads him. So he was called Vinayak. He beheads him. And what is happening here? There are 2 sons of Shiva, Skanda and Ganesh, or Murugan and Ganesh, and they take care of 2 fears of man. The fear of being killed by a predator, which is the Kartikeya, because he was a warrior. He protected the devas and the men from the asuras. So that is one fear, to protect yourself from the predators. And Ganesha, the fear of being starved.
That is why they show him with prosperity, with food, and he keeps eating those modaks. So that is the fear of starvation. Both are representing fear of the humanity. And he removes. मैम सॉरी टू इंटरप्ट प्लीज थोड़ा हिंदी भी यूज कर लो इंग्लिश Okay, okay, sorry. नो So मैम थैंक यू शिवा के जो दो बेटे हैं, वो दो हमारे जो ह्यूमंस के दो डर हैं सबसे बड़े, कि हमें दुश्मन मार देगा या हमें भूख मार देगी। उन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मुरुगन है या कार्तिकेय है, वो असुरों का नाश करते हैं, और गणेश जी जो हैं वो सारी मटेरियल ऑब्स्टिकल्स हटाते हैं। इसीलिए हम उनका नाम पहले यूज करते हैं, पहले ओम लिखते हैं कि हमारे ये काम पूरे हो जाएं। बच्चे एग्जाम से पहले जरूर पेपर पे ओम लिखते हैं। एंड हम लोग भी अपने काम में, अपने रजिस्टर्स में, लॉग बुक्स में हमेशा ओम पहले बनाते हैं कि मटेरियल काम में जो ऑब्स्टिकल्स आए हट जाएं, हमें प्रॉस्पेरिटी मिले, हमें खाना मिले, और हमारे को हर तरीके की हाउस होल्डर की जो मुश्किलें हैं वो हट जाएं और सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी मिले। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, द सन्स ऑफ द hermit शिवा indulge in the desires of the householder। जो तपस्वी शिवा हैं, उनके दोनों बेटे हाउस होल्डर या क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम वाले लोगों की मुसीबतें हटाते हैं, दोनों ही बेटे। सो ये नहीं हो पाता अगर पार्वती जी नहीं हो पाती या माँ गौरी नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों बेटे होते उन्हीं के हैं ना। तो दैट इज हाउ ये डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई यहाँ पे। सो पार्वती embodies the aspect of the domesticate nature which evokes the best of the human mind। पार्वती जी की वजह से अब जो शिवा हैं, उनके बेटे अब हाउस होल्डर की रक्षा कर रहे हैं। सो आप ये देखिए कि शिवा ने पहले ब्रह्मा का सिर काटा। फर्स्ट ही beheads ब्रह्मा, then he beheads दक्ष, and then he beheads विनायक। With each beheading, the new wisdom emerges. First marks the destruction of desire to claim ownership of nature, hence the goddess। सबसे पहले ब्रह्मा जी का सर काटा था शिवा ने। तो क्या हमें हर बारी उन्होंने सर काटा तो क्या मिला? नॉलेज मिली। नॉलेज क्या थी जब ब्रह्मा का सर काटा? कि आपने डिजायर को काटा, डिजायर को हटाया। एंड आप ये डिजायर कि हम पूरे नेचर को कंट्रोल कर सकें, हम अपने आप को इतना पावरफुल समझे कि हम पूरे नेचर को कंट्रोल कर सके, तो वो डिजायर हटाई। जब सेकंड टाइम उन्होंने जो डिस्ट्रक्शन करी, वो हमने कल्चर को कंट्रोल करने की करी। जब दक्ष का सिर कटा कि आप रिचुअल्स जो हम लोग करते हैं उसको कंट्रोल करके सोसाइटी को और पूरी कल्चर को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली आप इवॉल्व होते रहिए, चेंज होते रहिए, आप टिरेनिकल ना हो जाएं कि आप बोले कि नहीं दुनिया तो ऐसे ही चलेगी जैसे हमने बोला है। कई बारी रीत रिवाज जो है हमारे रास्ते की अड़चन भी बनते हैं, हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर अन्याय भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इंटरकास्ट मैरिज, आई एम गिविंग अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती क्योंकि हमारे रीत रिवाज कहते हैं, पर दुनिया बदल गई है, हमारे ख्यालात बदल गए हैं, रहने का तरीका बदल गया है। कोई बुराई नहीं है, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एवरी कल्चर, एवरी कास्ट, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, लेकिन लोग उन लोगों को मार देते हैं। तो दैट इज अ कंट्रोल ओवर कल्चर, शुड नॉट कंट्रोल ओवर दैट। तो जब उन्होंने दक्ष का सिर काटा तो वो कंट्रोल एक हटा, अगेन देवी आई सामने। तीसरी बार जब उन्होंने काटा तो उन्होंने गणेश जी का सर काटा, रिमूविंग द एक्सेस टू नेचर। गणेश जी रोक रहे थे उन्हें पार्वती के पास आने से। हम नेचर को एक्सेस कर सकते हैं, नेचर को अपने से दूर नहीं करना है। नेचर इज समथिंग विच इज फ्लूइडिक एंड हमारे साथ है वो। तो हम नेचर से भी दूर होकर कल्चर रिचुअल्स में नहीं फंस सकते, हमें नेचर से भी कनेक्टेड रहना है। सो अगेन द गॉडेस शिवा was got closer to the goddess। एंड सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन शिव पुराण में जब शुरू में क्या उन्होंने दिखाया, शिव जी ने पहले शादी करने से मना किया। जब शादी करी तो पार्वती को दूर रखा, एक होने से मना किया। जब फाइनली एक हुए तो उन्होंने जो बीज था वो बीज पार्वती को ना देकर आगे अग्निदेव को दे दिया, और वो घूमता घुमाता फिर वापस पार्वती जी के वूम में आया। तो पार्वती ने कहा मुझे बच्चा चाहिए, तो उन्होंने नहीं दिया, उनको अपना बच्चा खुद बनाना पड़ा। तो ये कहानी पूरी शिव जी की वो है जो कि एक हर्मिट थे, एक एसिटिक थे या एक योगी थे। वो क्या गृहस्थ आश्रम में घुसना ही नहीं चाहते थे। एंड पार्वती उन्हें कैसे लाई?
पार्वती ने जब उन्होंने कहा कि मैं बच्चा नहीं और करूंगा गणेश जी के टाइम, पार्वती ने डिसाइड किया कि मैं खुद ही अपने गणेश को क्रिएट करूंगी अपने आप से. सो शी टुक ओवर. शी सेड आई डोंट नीड यू. मैं खुद अपनी एम्पावर्ड हूँ, मैं ऑटोनॉमी लेती हूँ. आई विल हैव माई ओन चाइल्ड. एंड जब शी वॉन्ट्स, ऑफ कोर्स, देन बाय द टाइम व्हाट हैपेंड, शिवा वांटेड टू बी विद हर. अब शिव जी खुद उनके पास आना चाहते थे, उनका मन में परिवर्तन हुआ, पर वो आना चाहते थे. एंड जो विनायक हैं उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया. तब क्या हुआ? वायलेंस. वायलेंस क्या मतलब? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या था? फ्रिक्शन ये था कि जो शिव जी पहले अकेले रहना चाहते थे, अब वो अकेले नहीं रहना चाहते थे, अब वो पार्वती के साथ रहना चाहते थे. तो इसीलिए उनको गुस्सा आया और वो फ्रिक्शन हुआ या वायलेंस हुआ. दैट मीन्स कि देवी ने उनको डोमेस्टिकेटेड कर दिया था, उन्हें गृहस्थ बना दिया. राइट? शी नो लॉन्गर dances on his chest as Kali, but she now sits in his lap as Gauri. The tapasvi now wanted to become the yajman in the yajna. वो जो पहले तपस्वी थे, अकेले यज्ञ करते थे, अकेले मेडिटेशन करते थे, पूजा करते थे, वो अब यज्ञ में बैठ के यजमान बनना चाहते थे. लेकिन योगी तो वो रहेंगे ही, क्योंकि जो डिजायर है वो यज्ञ करने के बेनिफिट पाने की नहीं थी, भोगी बनने की नहीं थी, सिर्फ योगी बन के मगर कंट्रीब्यूशन देने की थी, यज्ञ करने की थी. सो ही वॉज स्टिल अ योगी, बट ही वॉज अ डोमेस्टिकेटेड वन. Right? So this was the conversion or the difference, how she made him a domesticated person. So the difference between Shiva with who was alone, who was just a yogi or an ascetic, becomes different when he's sitting with Parvati, with Ganeshji in the lap, with Kartikeya with them. Now he's a family man. सो आप देखेंगे अगर शिव जी की कोई मूर्ति या पूजा जहाँ होती है, जहाँ से गंगा शुरू हुई है, वहाँ अकेले उनकी मूर्तियां हैं, अपने तपस्वी पोज में बैठे हुए. वो एक एसेटिक हैं या वो एक तपस्वी हैं. अगर आप इन्हें गंगा की मंदिरों में देखेंगे जहाँ वो पूरी होकर नदी मतलब समुद्र के पास जाने लगती है, जैसे बनारस हो गया या कोलकाता हो गया, तो उनकी जो मूर्तियां होंगी वो देवी के साथ बैठे हुए होंगी एज अ फैमिली मैन with both the boys. So that is the change or the conversion that happens with Ma Gauri. She domesticates the ascetic. And she is the symbol of गृहस्थ आश्रम. आप देखेंगे जैसे काली का मैंने बताया, पहले बाल खुले हैं, आधे कपड़े पहने हैं, और वो नाच रही हैं, तांडव कर रही हैं शिवा के ऊपर, जबान बाहर है. इट्स अ वाइल्ड डिपिक्शन. जो माँ गौरी हैं वो बाल बंधे हुए हैं, उनके ज्वेलरी पहनी, गृहस्थ हैं, टीका लगाया हुआ है, वो एक गृहस्थ है. शी इज द डॉटर, टेम्ड पर्सन, डोमेस्टिकेटेड पर्सन, डिम्योर पर्सन. बेटी है, बहन है, और विष्णु की बहन माना गया है, बहन है, पत्नी है, और माँ है. तो दैट इज द सिंबॉलिज्म ऑफ हर रूप दैट वी सी. And yes, of course, I feel it's a very, very important roop that we need to see, because as pranic healers would understand that बहुत लोग सोचते हैं कि हम spirituality में आए हैं और प्राणिक healing में आए हैं, तो हम फैमिली से जुड़े नहीं हैं या अलग हैं और छोड़ दिया है. अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग ये सोचते हैं और पूछते भी हैं, बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज. स्पिरिचुअल होते हुए भी हम फैमिली का पूरा ध्यान रख सकते हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि हम सब कर्मयोगी हैं. फैमिली को साथ में रख के पूजा करनी चाहिए, साथ में रख के मेडिटेशन करनी चाहिए, वर्च्यूज सिखाने चाहिए, इकट्ठे प्रैक्टिस करनी चाहिए. वी नीड टू डोमेस्टिकेट आवर फैमिली. दैट इज द व्हाट यू से. ये हमारा फर्ज है और कर्तव्य है कि हम अपने परिवार को साथ लेकर स्पिरिचुअली ग्रो करें. अगर वो हमें रोक रहे हैं तो हम रुके नहीं, ऑफ कोर्स, लेकिन उनको छोड़ें भी नहीं, उनको साथ लें, उनकी मदद करें, उनकी हीलिंग करें, उन्हें समझाएं कि ये क्यों ज़रूरी है. सो दैट इज द रीज़न व्हाट spiritual aspirants should do, and stay in their grihastha ashram, and take, that is how we will raise the consciousness of this world, by saying that, like for example, master said one pranic healer per family and one erratic yogi per 1,000, and he said raise the consciousness of the world. हम बाहर के लोगों को तो बता रहे हैं, लेकिन परिवार को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है.
परिवार अनफॉर्चुनेटली सबसे एंड में मानता है हमारी बात, लेकिन हमें लगे रहना है और ज़रूर मानेगा। कन्वर्जन्स बहुत होते हैं, वो लोग, हम उन्हीं लोगों को जो बहुत एंटी होते हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी के, इवेंचुअली देखते हैं कि हमारे साथ हैं और सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो उनको लेकर चलना है प्यार से, बहुत ज़्यादा बता कर नहीं कि ओ आई हैव बिकम इवॉल्व। से दैट आई एम हियर टू इवॉल्व एंड हेल्प ऑल ऑफ यू। That is the version I feel is of Ma Gauri that we must have in all of us. That is what I feel. So I think I've done it in good time. Um, Ma'am, some intro about you. How did you get into pranic healing? What was the inspiration and how did you survive so far? you know, the funny thing is that I got into pranic healing by chance. कई बार लोग पूछते हैं कि आप क्या बहुत बीमार थे या कोई बहुत दुख भरी घटना हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ क्यूरोसिटी की वजह से अंदर आई। The funny thing is that I was a garment exporter earlier. 20 साल मैंने garment export किया, and touchwood by God's grace बहुत successful था मेरा business, and I was very ambitious and I was doing very well and सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन मुझे बार बार लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ और करना है which has a deeper meaning. I very strongly felt कि मुझे लोगों का भला करना है, पता नहीं क्या करना है लेकिन कुछ तो करना है। एंड काम, सिर्फ काम करके, टारगेट्स पूरे करके सक्सेसफुल होकर वापस ऊपर चले जाना कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा था। थैंकफुली माय फैमिली वाज वेरी स्पिरिचुअल, माय मदर वाज वेरी स्पिरिचुअल, तो हम लोगों का नेचर था ऑलरेडी बेंट टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। मुझे लगा मुझे कुछ और बहुत बड़ा काम करना है। तो एक दिन अचानक मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, एंड इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन बिकॉज लाइक आई सेड इट वाज सक्सेसफुल। बट मैंने कहा नहीं, अब हो गया। एंड थैंकफुली मेरा बिजनेस मेरा था, माय हस्बैंड हैड अ सेपरेट बिजनेस, तो मैं बंद कर सकती थी। गॉड वाज काइंड एंड आई शट माय बिजनेस एंड आई सेड अब मुझे कुछ और करना है। एंड लोग बोल रहे थे अब क्या करोगे, आपको तो शुरू से काम करने की आदत है, बोर हो जाओगे। ऐसे डोंट वरी, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एंड लिटरली 1 साल के बाद मुझे प्राणिक हीलिंग मिला, बहुत सारे साइंस आए कि आप प्राणिक हीलर हैं, आप करते हैं। मैंने कहा ये लोग अचानक से प्राणिक हीलिंग की बातें क्यों कर रहे हैं। एंड देन माई सिस्टर, हर फ्रेंड टोल्ड हर टू डू इट, शी डिड प्राणिक हीलिंग एंड शी टोल्ड मी आप भी आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आना, बिकॉज आई एम वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल, तो मैं ऐसे ब्लाइंड फेथ में नहीं जा सकती। फिर उन्होंने कहा नहीं, ब्लाइंड फेथ नहीं है, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ये बड़ा साइंटिफिक है। तो भी मैं मान नहीं रही थी। फिर एक दिन मैं जल गई, बहुत बॉइलिंग पानी मुझ पे गिर गया। एंड वो अभी उन्होंने सिर्फ एडवांस क्लास तक किया था, बट शी हील्ड मी। एंड मिराक्युलसली मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने कहा ये तो कुछ मैजिकल लग रहा है, बट फिर भी मुझे लगा नहीं कि मैं कर पाऊंगी। फिर कुछ महीने में मेरी कजिन आई यूएसए से, उन्होंने कहा कि मेरी मदर इन लॉ भी रेकी हीलर है, पर वो कह रहे हैं उनकी फ्रेंड प्राणिक हीलर है, ट्रेनर है, उनसे पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ है। That was Anita Gauri ji. She was my first trainer, and Shakun Goyal ji, she was also my first trainer. तब एक क्लास 2 ट्रेनर्स कराते थे। तो आई हैव टू रियली थैंक देम, द वे दे टॉट मी, आई वाज सो इंस्पायर्ड कि मैं फटाफट फटाफट क्लासेस करती चली गई और मैं बहुत एंथुजियास्टिक थी। एंड विद इन अ ईयर आई थिंक दे आस्क्ड मी वुड यू लाइक टू बी अ ट्रेनर। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं कब ट्रेनर बनी, कब ट्रस्टी बनी, कब मैनेजिंग ट्रस्टी बनी, कुछ मतलब कुछ रोकने वाली बात ही नहीं थी। मुझे इतना अच्छा लगा, और मास्टर से मेरा ऑटोमेटिकली कनेक्शन हुआ, जबकि मैं मास्टर को कभी नहीं मिली हूँ। मुझे शुरू में कहा गया ओ हो तुम, कितने अफसोस की बात है तुम नहीं मिली। तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे मास्टर सामने दिखाई देते हैं, मैं उनसे बहुत सवाल पूछती हूँ, मुझे बहुत सारे जवाब मिलते हैं और मुझे डायरेक्शन मिलती है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं मास्टर से नहीं मिली। सो फॉर ऑल दोस्त जो नहीं मिले हैं, प्लीज दुखी मत होना। मुझे भी ऐसे बोला जाता है तुम तो मिले नहीं बेचारे, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, बेचारी तो मैं हूं ही नहीं। क्योंकि मास्टर कहते हैं दैट स्पिरिचुअल पीपल आर डायनामिक, दे आर नॉट एनीमिक। Believe me, I loved this quotation. I loved Master's every quotation because it empowers us. It does not make us fearful. जैसे रिलीजन थोड़ा बहुत डर डालता है कि ये गलत किया तो भगवान जी पाप चढ़ाएंगे, तो मुझे नहीं लगता था। मुझे लगता है भगवान जी बहुत अच्छे हैं और दयालु हैं, कोई पाप नहीं चढ़ाएंगे। तो मुझे मास्टर ने एज इफ रीअफर्म किया कि स्पिरिचुअल पीपल आर वेरी डायनामिक, एंड आई फेल्ट वेरी डायनामिक। ऐसे मुझे पूरा विश्वास है कि अगर गुरु जी मिले तो अच्छे ही होंगे, रक्षा ही करेंगे, तो इतना कुछ खराब थोड़ी करेंगे। तो मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ, एक्चुअली आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट,
without having much experience in pranic healing, I kept moving very fast. And जो पुराने लोग थे वो हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, but मुझे मास्टर से ही प्रेरणा मिलती गई, रास्ता अपने आप मिलता गया। ना मैंने किसी से कभी पूछा कि मुझे ऐसे करके ऐसे बनना है, मुझे पता ही नहीं था ट्रस्टी होता क्या है, पर मास्टर अपने आप बनाते चले गए, अपने आप रास्ता दिखाते गए, काम देते गए। एंड आई रियली बिलीव दैट द रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क इज मोर वर्क। तो मैं काम करती चली गई, अभी भी कर रही हूँ और आगे भी मास्टर मुझे काम देते रहेंगे, मुझे विश्वास है, और मैं उनकी टीचिंग्स बढ़ाती रहूंगी। So that is how I survived in this school for 15 years, and I think I will continue to. Wow, this is so inspiring. Thank you so much, ma'am. It's like work until you no longer have to introduce yourself. That is my motto. Absolutely, absolutely. We don't need any post to work. I never had any post. I used to just work. And people would say, "Why do you work? Why do you do so much?" I said, "क्योंकि काम करने की आदत है, तो अब यही काम करते हैं, मास्टर का काम करेंगे." And work is enough. You are right. You don't need any introduction. True. I agree. 100%. Thank you so much, ma'am. This was so inspiring. Would love to have you on board again. Thank you so much for wonderful session. Thank you so much. Thank you, Gauri, Thank you. for the lovely insights. Thank you so much. Thank you, all of you, for taking out the time and coming and listening. And Ma'am, somebody has a question. Which chakra do we focus on today? crown. Crown. Okay. Yes. Now we've reached the crown. through the Yes. Sumna. And we all know how to reach the crown, right? The blessings are coming through from Master. Yes. So thank you so much again, once again. Amini ma'am, I would like to invite you for mass healings. Thank you so much for joining in, Amini ma'am. Thank you, Bhairavi. Thank you, Gauri. Thank you, Daben. We'll Thank you. start our healing. Yes, we want the today's relationship healing, right? So just be aware of the entire body. Close your eyes. Tip of the tongue connect to the upper palate. Feel the energy. It's where we do the general sweeping first. Feel the energy in the aura. Entire aura is getting clean. Now be aware of the crown chakra. The left up or down, right up or down, middle root of the chakra. All the negative thought entities, thought elementals. Just feel the energy in the crown. Feel the forehead. Shift the energy to the ajna. Lack of confidence. So, for self-esteem. Feel the energy is penetrating deeper, deeper, deeper into the ajna chakra, root of the chakra. Divine God, Divine Father, Divine Mother, with the help and blessing of our teacher, Grandmaster Chokoksu, Mahapurjanini, all the great, great ones, Holy Gurus, Holy Masters, Saints, Archangels, Holy Angels. So this energy is penetrating to the entire through the Ajna chakra. It's going into the through the back of the head, both eyes, ears, entire mouth. Feel the throat, entire throat, root of the throat chakra.
root of the throat. It's going into the secondary throat. It's coming through the back of the heart. And heart. Feel the energy is penetrating to the front solar. Feel any kind of irritation, fear, all kind of excessive criticism, all negative qualities. Especially our relationship become first, all kind of anger towards to the people. Manifested and manifested suppress anger. Bad solar. Turn up and down the root of the solar. The protective herbs heal and seal, going deeper inside the root of the chakra. Be aware of the navel. Because of the psychological problem, the relationship problem, what have affected the digestive system. It's going into the sex chakra, into the sex chakra, all the childhood trauma. Mm. Feel the base of the spine. The main chakra. Feel the entire spine. Feel the entire aura. Stabilize, stabilize, stabilize. With the blessing of Supreme God, Divine Father, Divine Mother, with the help and blessing of our teacher, all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, and spiritual helpers, on the 10th day of the 8th day of the Navaratri day, Devima, and feel the energy is penetrating each and every person's entire body.
every chakras, meridians, nadis, muscles, bone marrow, quality of blood, each and every area is filled with this energy. In their brain, respiratory system, digestive system, reproductive system, circulatory system, and the eliminative system. Each and every cells of our body filled with this Devi Ma's blessings. So good, so good, so good. Okay. Okay. Thank you, Master Chua. Thank you, Mahapurusham, for this priceless teaching and priceless blessing. Thank you. Thank you. Thank you so much, Amini ma'am. Really blessed and grateful to have you on board. Thank you so much. Thank you for the wonderful healings daily. Thank you, Gauri ma'am. Thank you, Amini ma'am. Thank you, Neeta Bain. Lots of gratitude. Let's close with a prayer. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, thank you for your priceless blessings for divine light, divine love, divine guidance, divine love, mercy, inner healing, physical healing. Thank you for the inner strength to sit daily for the sessions of Navaratri. Thank you for blessing us with divine love, divine light, divine power, divine love, mercy, inner healing, physical healing at all levels for being. Thank you for helping us to get deep insights on all the days. And today with Gauri ma'am for day 8 of Navaratri and receiving blessings, healings, and energies from Mahagauri and healings from Amini ma'am. Thank you for blessing us with super success, prosperity, abundance, spirituality, good health, good wealth, prosperity, abundance at all levels of being. To Master Coxwheel or Buddhist meaning, thank you all for priceless blessings. With deep, deep gratitude, reverence, and respect, abundance of devotion and love, we thank you in full faith. So be it. Inhale the blessings. Open your eyes with a broad smile on your face. Atma Namaste, everyone. Thank you so much for joining in. See you all tomorrow. Atma Namaste. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank Bye. you, Gauri. Thank you, Amini. Thank you, Bhairavi. Thank you. Thank Goodbye. you. See you all Bye. tomorrow.